My dear students, welcome you in this video. The topic is transformation. In this video, I shall teach you interchange of affirmative and negative sentences. The first rule is by removal and use of adverb to. For example, she is too weak to pass. This is an affirmative sentence. Now it's negative. She is so weak that she cannot pass. The second example, the milk is so hot that I cannot drink. Negative. Now it's affirmative. The milk is too hot for me to drink. Second rule, by interrogative and assertive. By interrogative and assertive. First example, who has seen the wind? Affirmative. Nobody has seen the wind. Negative. Can you love a sinner? You cannot love a sinner. Is this worthy of you? This is not worthy of you. I shall never forget your kindness. Shall I ever forget your kindness? In this way, all above rules I have taught you in detail. In the first video, I taught you removal and use of adverb to, and in the perhaps fifth video, I have taught you by interchange of interrogative and assertive sentence, and now in Hindi. बच्चों, आज के वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन का 6th पार्ट में मैं आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नियम है रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। इस नियम को मैंने वीडियो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया है और यहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ कि शी इज टू वीक टू पास, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका निगेटिव, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास। सेकेंड एग्जाम्पल, द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसका दूसरा नियम है बाय इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, अर्थात इंट्रोगेटिव और असर्टिव के माध्यम से। Who has seen the wind? Nobody has seen the wind. Can you love a sinner? You cannot love a sinner. Is this worthy of you? This is not worthy of you. I shall never forget your kindness. Shall I ever forget your kindness? Now, the next rule, by interchange of degrees. For example, Ashoka was the greatest king of India. No other king was so great as Ashoka of India. Mohan is wiser than Shyam. Shyam is not so wise as Mohan. No other city is so big as Kanpur in UP. Kanpur is the biggest city in UP. The Taj Mahal is more beautiful than any other building in India. No other building is so beautiful as Taj Mahal in India. These are the sentences. With the help of degrees, we can easily change affirmative to negative or negative to affirmative. Both kinds of examples are given here.
Now the fourth rule, by using not with opposite word or removing not with opposite word. For example, the knife is sharp. Affirmative. The knife is not blunt. Belong of sharp is blunt. Not is used. So the meaning is same. The knife is sharp. The knife is not blunt. Shyam is not a dull boy. Shyam is not an intelligent boy. Thus, we can easily change an affirmative sentence into negative with the help of using not with opposite word or removing not with opposite word. Now the next rule. Before teaching you the next rule, I shall explain in Hindi. बच्चों, बाय इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, डिग्री के माध्यम से भी हम अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बना देते, और ऐसा मैं पीछे पढ़ा चुका हूं. अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया. नो अदर किंग वाज सो ग्रेट एज अशोका ऑफ इंडिया. मोहन इज वाइजर देन श्याम. श्याम इज नॉट सो वाइज एज मोहन. नो अदर सिटी इज सो बिग एज कानपुर इन यूपी. Kanpur is the biggest city in UP. The Taj Mahal is more beautiful than any other building in India. No other building is so beautiful as the Taj Mahal in India. But the next rule, by using not with the opposite word or removing not with the opposite word. अर्थात विलोम शब्द के साथ not का प्रयोग करके या नाट को हटा करके विलोम शब्द का प्रयोग करके. अर्थात द नाइफ इज शार्प, चाकू पैना है. द नाइफ इज नॉट ब्लंट, शार्प का विलोम ब्लंट. चाकू मुथरा नहीं है तो कैसा है, पैना है. श्याम इज नॉट ए डल बॉय. डल का अपोजिट इंटेलिजेंट. श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इस प्रकार बच्चों ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा और समझने की कोशिश भी करते रहें. समझने की कोशिश भी करते रहें. फिफ्थ रूल, बाय इंटरचेंज एज सुन एज इनटू नो सूनर डॉट डॉट देन. फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज वी रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड. नो सूनर डिड we reach at the station then the train started. The second example, no sooner had the peon rung the bell than I reached school. As soon as the peon had rung the bell, I reached school. The sixth rule, by interchange only or alone into none but. For example, only Neha topped the merit. None but Neha topped the merit. None but Shyam got the first prize. Shyam alone got the first prize. Seventh rule, by double negative. Double negative, do not fail or did not fail plus 2 plus v power 1. I saw the Taj Mahal. I did not fail to see the Taj Mahal. He plucks the flowers. He does not fail to pluck the flowers. In this way, I have taught you interchange of affirmative and negative. There are 7 rules. First, by using or removing adverb to. Second, by interchange of degrees. Third, by interrogative and assertive. Fourth, by
affirmative and negative. Fifth, by interchange as soon as into no sooner dot dot than. By interchange of only alone into none but. By double negative etc. Now in हिंदी बच्चों फिफ्थ रूल है बाय इंटरचेंज एज सुन एज इंटू नो सूनर डॉट डॉट दैन. एज सुन एज अफर्मेटिव है, नो सूनर नेगेटिव है. एग्जाम्पल, एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड. नो सूनर डिड वी रीच एट द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड. नो सूनर हैड द पियोन रंग द बेल then I reached school. As soon as the peon had rung the bell, I reached the school. By interchange only alone into none but. Only या alone को none but में बदल करके. For example, only Neha topped the merit. None but Neha topped the merit. None but Shyam got the first prize. Shyam alone got the first prize. सेवेंथ, बाय डबल नेगेटिव डू नॉट या डिड नॉट के साथ में 2 + b⁻1 का प्रयोग करके. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द ताजमहल. आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल. ही प्लक्स द फ्लावर्स. ही डज नॉट फेल टू प्लक द फ्लावर्स. बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको निगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव में बदलना सिखाया, जिसके 3 रूल तो अलग से हैं जिनको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जैसे एडवर्ब टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज और इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस. उसके पश्चात जो भी मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं उनमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी. If you have any problem, you can consult. Thank you.